large, right? Offline bhi, online bhi. So, and the time is also 1.5 hour, right? So I keep on asking everyone कि कोई doubt है, कोई question है तो पूछिए. So ये online students के लिए भी है, ये offline students के लिए भी है, ये दोनों के लिए है, ठीक है? अब आप volunteer करेंगे, अगर आपको कोई doubt है तो आप पूछिए उसको क्लास में, ठीक है? अगर एक-एक का नेम रिमेंबर मुझे याद भी नहीं रहता है और आई ट्राई a lot to remember the names, but it's not possible. So I keep on asking. If you have any doubt, just ask. So online students, for you, I will be giving you hints, and even in between, I keep on reading the comments, right in between. So आप लोग पूछेंगे, ठीक है? All right. Can you make me revise what we did in a previous class? पूरा रिवाइज कराइए, फिर हम न्यू टॉपिक पे we will go. Biodiversity we will do, right? What we did in biodiversity? Hmm? Okay, what is the types? Genetic that we have done. उसके अलावा we have done the specification also. What we have done? The values which are you new in the class? What's your name? Utkarsh. Okay. Yes, you were not attending previous classes, right? Were you attending? अच्छा, ठीक है. So on Saturday I'm keeping the extra class. ठीक है? For you and you और एक दो students on है. She has not come today. ठीक है? Alright. But you joined पहले से 4 days back. हाँ, तो फिर why didn't you join? अच्छा, ठीक है. फिर वो अब अच्छा ठीक है. Okay. What is the need for biodiversity conservation? नीड क्या है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का? क्या क्या किया था, क्या क्या वैल्यू सेट करता है? इकोलॉजिकल, एस्थेटिक्स और कल्चरल, Productive, social, ethical, and aesthetic. करेक्ट. सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर ऑल दैट. ये मेंस में इट विल बी आस्क्ड, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन विल कम. ओके, अब लिखिए नीड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? राइट डाउन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. What is biodiversity conservation and why do we need it? Conserve करना क्यों? Why there are so many measures to conserve the biodiversity? Write down the need for conservation of biodiversity. First, to make people aware. First, to make people aware of the importance of biodiversity and consequences of its loss. I'll repeat again. To make people aware of the importance of biodiversity, and consequences of its loss, comma, fostering a sense of, fostering का spelling is written, fostering means to increase, fostering a sense of, responsibility, and commitment. Responsibility and commitment to its protection. And commitment to its protection. Right? Done. Next point, to achieve sustainable development. Second point, to achieve
sustainable development by ensuring by ensuring that current and future generation that current and future generation have the access to the resources they have the access to the resources and services provided by diverse ecosystem diverse ecosystem comma without depleting them beyond their capacity depleting depleting without depleting them beyond their capacity to regenerate to regenerate. Okay, so why sustainable development is required? See, there are two things with biodiversity. Importance it attached to the biodiversity along with ecological importance. कौन सी importance है? एक ecological importance है, ecological, और दूसरा there is economic importance. Now you tell me, if I say that economically the people should not dependent on the nature, so do you think it is justified? क्या ये हो पाएगा, possible है? Because we need the basic needs like crops, lumbering, etc. activities that they do. So ये economic importance attached है with the biodiversity. And if I say उससे क्या कम हो जाएगा, your GDP etc. will decline, right? Because a lot of people are dependent on the 60% of the people, 56% are still dependent on the agriculture and allied activities for their sustenance, right? What about ecological? Ecological means you're related to ecology. Ecological means what? यही तो पढ़ रहे हैं, nature, right? Ecological importance जो attached है, अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ और सिर्फ ecology पर हम depend हो जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी छोड़ दीजिए, तो डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? हो पाएगा सस्टेन? नो. इफ ऐसे इकोनॉमिक पे डिपेंड हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, दे विल गेट द रिपरकशंस. किस तरह के रिपरकशंस? लाइक यू आर सीइंग climate change, you are seeing a lot of activities which are happening around floods, your cloud burst, everything's related to that. Okay, so we have to maintain the balance of both of them. When we say we will be deriving the economic importance from the biodiversity, along with also keeping it healthy, this form is known as what? Sustainable form of using the nature, right? This is called, that's why we have used the word sustainable development. अब आपको समझ आया sustainable development का मतलब क्या होता है? हम बचपन से from the 5th class we are reading sustainable development, but nobody has told us what is sustainable. एक वो डेफिनेशन हम याद कर लेते हैं, कीपिंग एवरीथिंग इंटैक्ट, यूजिंग द करंट रिसोर्सेज इन कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर जनरेशन, कीपिंग इन आवर माइंड द फ्यूचर जनरेशन. ये हम 5th क्लास से आई थिंक वी हैव स्टार्टेड दिस. हाउ मेनी ऑफ यू नो, राइट? व्हाट इज अ स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट? हाँ, यूजिंग द रिसोर्सेज जुडिशियली टू preserve it for the future generation, right? But what is actual meaning of it? It is this: using the resources because we can't stop it. Economically, we are dependent on it. What is the other way out? कोई है ही नहीं. कुछ है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करोगे, उसमें भी अगर हम we talk about the manufacturing of the clothes, where the raw material is coming from? Cotton, textiles. Where the cotton is coming from? Agriculture.
रॉ मटेरियल तो वहीं से आ रहा है ना. So the bottom line is that you have to understand we will be doing our activity, but we'll be not forgetting that there is an ecological importance attached to it. We'll be also preserving this. ठीक है. जैसे इंडिया में जीडीपी होता है, वैसे भूटान में क्या होता है? हैप्पीनेस और क्या होना चाहिए? There was one of a very famous renowned author, I'm forgetting his name. He said instead of GDP we should also have GEP, gross environmental, what is the full form of this? Product, gross environmental product, कि हमने कितना ज्यादा improve किया है with respect to environment. हम GDP निकालते हैं, what we call it as 7% growth, this much percent of growth in a year. One of the author, a famous author, who has also told us that you should also focus on GEP, which is gross environmental product. अगर उसके साथ साथ आप ये भी निकालने लगेंगे, then you will be able to see कि कितना improvement है. ठीक है. कोई डाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन थर्ड पॉइंट. टू सेव द स्पीशीज फ्रॉम extinction, to save the species from extinction and over exploitation, to save the species from extinction and over exploitation by implementing measures, by implementing measures and policies, by implementing measures and policies that regulate, comma, sorry, not comma, regulate hunting, comma, fishing and habitat destruction. Ma'am, regulate hunt. What? अच्छा, बाद में दोबारा. What happened? Okay, write down. To After save regulate, okay, regulate hunting, comma, fishing and habitat destruction. I'm again repeating, regulate hunting, comma, fishing and habitat destruction. Written, everyone? Next point, to safeguard the endangered, to safeguard the endangered species, to safeguard the endangered species and prevent their disappearance, and prevent their disappearance from the planet, and prevent their disappearance from the planet, comma, thereby preserving the biodiversity and ecological balance and ecological balance of our ecosystem, of our ecosystem. ठीक है.
Okay, write down. There is one question I want you to practice right now in 5 minutes. ठीक है, हम पहली बारी एक्टिविटी कर रहे हैं that we are doing a mains question practice today. ये irrelevant मतलब irrespective of आपका स्टेट है, ठीक है. अब इसमें मैंने स्टेट स्पेशल नहीं डाला है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्पेशल होगा तो पीपल हु आर कमिंग हु आर गिविंग द यूपी PCS, so what they will do, उसमें लिखा होगा कि bring out or write the initiative taken by the UP government, right? या फिर हरियाणा गवर्नमेंट या हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट. So I am doing irrespective of those initiative taken by respective states. I am giving you generalized question कि आपको practice कैसे करना है, ठीक है. लिखिए, discuss how India can discuss how India can write down, discuss how India can mainstream biodiversity, mainstream biodiversity in all relevant sectors, in all relevant sectors of development to achieve long-term sustainability, to achieve long-term sustainability. This is what I am making you practice today. ठीक है, 250 words में you have to write. ठीक है, एक स्ट्रक्चर आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू राइट, कैसे लिखते हैं. इससे पहले किसी ने लिखा है मीन्स का आंसर कैसे लिखा जाता है? नोबडी नोज, राइट? ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इंट्रो. किस बारे में है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स. क्या है क्वेश्चन? व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग? क्या पूछ रहा है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में. रीड आउट द होल क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. प्लीज एनीबडी रीड लाउडर फॉर मी. हाँ पढ़िए. राइट, सो इट इज टॉकिंग, सो यू हैव टू राइट द कीवर्ड. यहाँ पे आप कीवर्ड्स लिखेंगे. पहले क्या? बायोडाइवर्सिटी, टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस इन सेक्टर्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसमें क्या लिखेंगे? पहले आप डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, पहले आपने वो बता दिया डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. उसका एक लेवल अहेड आप जाएंगे, अभी नहीं, बाद में, बाय एडिंग द डेटा. जब आप डेटा ऐड करते हैं कि इंडिया इज वर्किंग दिस मच और इट हैज इम्प्रूव्ड सो मच इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड increase their biodiversity conservation from this to this, or maybe they have allocated this much of budget this year to in the biodiversity conservation. ठीक है, तो वो एक स्टेप अहेड हो जाएगा जब आप डेटा ऐड करने लगेंगे इसमें. और डेटा ज्यादा ऐड नहीं करना, बस इंट्रो में आप ऐड कर सकते हैं टू गिव अ गुड व्यू पॉइंट टू द एग्जामिनर दैट यू नो वेल. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? इंट्रो के बाद यू, दिस इज अ बॉडी ऑफ योर आंसर. बॉडी कैसी होनी चाहिए आंसर की? पॉइंट वाइज, बड़े बड़े पैरास नहीं लिखने हैं. ठीक है, पैरास इरिटेट एग्जामिनर्स. पैरास नहीं लिखनी. सबसे अच्छा तरीका क्या है? सब पॉइंट्स लिखेंगे इस तरह से. जैसे मैंने एक सब पॉइंट लिखा, फिर उसके नीचे उसके सब पॉइंट्स लिख सकते हैं ऐड करके. फिर एक सब पॉइंट लिखा, फिर उसके सब पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. फिर सब पॉइंट लिखा, दैट्स इट. ज्यादा भरना नहीं है. ठीक है,
Yes, you can do. उसके बाद क्या करेंगे, एक बार लिख लीजिए इसको, if somebody is writing, बैक करो, जी, पहले लिख लीजिए। पहले आप लिखेंगे, फिर मैं आपको एक मॉडल आंसर लिखवाऊंगी आज, ठीक है, कि कैसे लिखने, क्या हुआ, वैसे लो, ठीक है। पहले फॉर्मेट लिख लीजिए कैसे लिखना होता है, ठीक है। PYQ जो होते हैं आपके, जो GS1 GS2 GS3 वाले होते हैं, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ज्यादा पूछे जाते हैं, यू नो दैट ना। जो आधे वो सेम होते हैं एज कम्पेयर टू यूपीएससी। जैसे यूपीएससी के अगर आपको जीएस का क्वेश्चन उठाएंगे और किसी भी स्टेट का जनरल GS1 GS2 किसी का भी उठाएंगे, सेम होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी, स्पेशल में यू विल गेट डिफरेंट, उसमें आपको स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा कि स्टेट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, स्टेट्स की क्या स्कीम्स थी, स्टेट की क्या स्ट्रैटेजीज थी, ठीक है। दैट यू हैव टू डू। मोस्टली इंडिया के बारे में पूछते हैं। मैम, जो आपने क्वेश्चन दिया एक बार आप उसको रिपीट कर पाएंगे प्लीज? यस यस, लिखिए, discuss how India can discuss how India can mainstream biodiversity conservation in all relevant sectors of development to achieve long-term sustainability, ठीक है। किसने लिख लिया, लिख लिया आपने, ठीक है, ओके। सो इस तरह से आपने क्या करा, आपने अब यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करेंगे आप, व्हाट इज, अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करना है, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग इंडियाज मेजर्स इन डिफरेंट रेलेवेंट सेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको क्या हाईलाइट करना है, डिफरेंट सेक्टर्स, और उसके अंदर पॉइंट्स कि इंडिया ने इस सेक्टर में, फिशरी सेक्टर में, मे बी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मे बी और टेक्सटाइल सेक्टर में, व्हाट मेजर्स दे हैव गॉट, ठीक है। जब आप ये सेक्टर्स हाईलाइट कर लेंगे थ्रू दीज पॉइंट्स, ज्यादा पॉइंट्स नहीं ऐड करने, बिकॉज यू हैव टू आल्सो सी। अब क्या करेंगे, आप चैलेंजेस लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ होलसम आंसर। फिर आप चैलेंजेस लिखेंगे, चैलेंजेस, या अगर रिक्वायर्ड है तो वे फॉरवर्ड, ठीक है। वे फॉरवर्ड या डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसमें लास्ट में क्या पूछा है, डिस्कस, डिस्कस इज द कीवर्ड। कभी कभी एलुसिडेट होगा, कभी कभी कमेंट होगा, कभी कभी क्या होगा, क्रिटिकली एनालाइज। हर चीज का क्या क्या अलग अलग मतलब होता है आज नहीं बताऊंगी, एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। डिस्कस मीन्स यू हैव टू डिस्कस एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस, ठीक है, ओके। सो आई विल गिव दैट ऑल्सो कि डिस्कस का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अभी आप चैलेंजेस लिख सकते हैं इसके अंदर कि व्हाट चैलेंजेस दे आर फेसिंग व्हाइल डूइंग ऑल दैट, ठीक है। एंड देन इसमें चैलेंजेस से ज्यादा क्या रिक्वायर्ड है, आप वे फॉरवर्ड लिखें, क्योंकि डिस्कस पूछा है तो चैलेंजेस से ज्यादा रिक्वायर्ड है कि आप वे फॉरवर्ड लिखें कि व्हाट अदर स्ट्रैटेजीज दे कैन और दे शुड। देखिए, जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो जो ऑलरेडी है वो तो है, एग्जामिनर्स आपका माइंडसेट तब पड़ता है व्हेन दे आर वाचिंग द वे फॉरवर्ड, दैट हाउ मेच्योरली यू हैव रिटन द वे फॉरवर्ड, ठीक है। How you can think, because you have to be a bureaucrat, and once you have to be a bureaucrat you have to implement these policies। आपको पता होगा ये बात, that you have to implement all these policies, you have to bring out the changes। So how maturely you have given the way forward, that is important, how innovatively you can think,
obviously that should be feasible also. How? Economically feasible, है ना? ऐसा नहीं आपने कुछ ऐसा प्लान बता दिया जो इंडिया उस पे बजट मतलब कर सकता है, बट बिकॉज यू हैव मेनी पीपल टू केटर, देन यू कैन नॉट डू इट. अब ऐसा कोई आइडियलिस्टिक थॉट नहीं लेकर आएंगे, ठीक है? जैसे कुछ प्रॉब्लम है कई जगह पे, तो यू कैन डिस्कस कि हम ड्रोन भिजवा देंगे बहुत सारी जगह पे. इट इज नॉट इम्पॉसिबल एवरीवेयर. दो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, बट यू हैव टू ऑल्सो सी द बजट, एंड ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो ऑलवेज सी a kind of a solution which is economically viable. Always remember, ठीक है? So way forward आप इस तरह से लिखेंगे, and then last conclusion. Conclusion is must. Conclusion के बिना कोई आंसर पूरा नहीं है, और conclusion को बहुत अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है? Conclusion के बिना कोई आंसर आपका पूरा नहीं है. उसके अंदर आप quotes भी लिखेंगे, उसके अंदर आप लिखेंगे. There was one of the student, I guess, of UPPCS. I still remember her name. She used to write wonderful answers. मैंने यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भी ऐसे नहीं लिखते हुए देखा. यूपीपीसीएस की शी वाज a student, and I still remember she has given UPPCS means this year. Abhi recently she contacted me also. At that time I was taking her mentorship UPPCS ka full time. Wonderful answers. The way she used to express, intro, body, I mean, I used to love to read her answers. Itna acha. I think I have her copy, and if possible I'll show you how actually the answers are written. Wonderful she was. And she has made small mind maps of each and every topic. I used to ask her, how do you remember all this, or आप देख के कहीं से कर? कहती नहीं, I made small mind maps and I keep on referring it. If I get a chance to meet her again, then I'll tell कि उनका जो लिखने का तरीका था वो एक दिन में डेवलप नहीं हुआ. She has worked a lot on that. And if I get a chance, मेरे पास अगर उनका कॉपी रखा होगा कोई, I'll ask admin, so I'll definitely provide that to you. देखिएगा किस handwriting, flow diagrams, the way she has written, excellent. And I think she should get through. अगर वो get through नहीं होंगे तो कौन होगा? God knows. She should get through. She has written means अभी शायद complete 29 जुलाई से आपके जून से थे ना means UPPCS के. Do you know the timetable ना? 29 जून से थे. I think काफी पहले खत्म हो गए. That's why. ठीक है? तो आप रीडिंग हैबिट्स डालिए, लिखने का हैबिट डालिए, बिकॉज वो जो एक्सीलेंस अचीव होता है वो बहुत लिखने से होता है, वन डे प्रोसेस नहीं है. ठीक है? ओके. अब लिखिए आंसर. ट्राई करिए क्या क्या लिख सकते हैं. सोचिए जितना भी नॉलेज है. ये मत सोचिए कि मैं अभी नया हूं, हाउ विल आई राइट. नहीं, ट्राई. ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिस इज नोन एज ब्रेनस्टॉर्मिंग. सोचिए कैसे लिखेंगे. देखिए जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो आपको यूपीपीसीएस में या फिर किसी भी, सॉरी फॉर ऑलवेज यूजिंग यूपीपीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस, ठीक है? सो स्टेट पीसीएस का आप कुछ भी ले रहे हैं तो ऐसे आपको क्या मिलेगा? हैव यू सीन द नोटबुक कैसे मिलती है? वो कैसे की बाइंडेड नोटबुक होती है. इनफ होगी आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा शीट्स नहीं रिक्वायर्ड होंगी. तो इसमें आपको कितना मिनट मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा एक आंसर लिखने के लिए? 8 मिनट्स. गुड. ऑन एन एवरेज 8 मिनट्स. उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना. क्वेश्चन छूटा मतलब यू आर आउट ऑफ द रेस. अगर एक भी क्वेश्चन छूटा, एक भी पेपर, बिकॉज टॉपर्स डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन. रूल नंबर 1. And rule number 2, even if you don't know any question, attempt it. Always remember, there will be some of the question which will be new for everyone. You cannot prepare everything, but you have to develop the skills to attempt that question. कुछ भी आके अगर कुछ भी पूछ लिया उन्होंने, you know how to bluff the examiner. That is the right word. That is called bluffing.
कि उनको लगना चाहिए कि आपको इसमें आता है, ठीक है। कुछ ना कुछ करके वो आपको मार्क्स देंगे, 0 से तो अच्छा है, राइट। और अगर मैं किसी से ही पूछती हूँ हाउ वाज योर एग्जाम, और अगर एग्जामिनर बाहर निकल के आया और बोलता है सॉरी द एस्पिरेंट हैज कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल एंड ही हैज सेड कि मेरे 2 क्वेश्चन मिस हो गए इस पेपर में, नेक्स्ट पेपर में कवर कर लूंगा, आउट ऑफ द रेस। Highly competitive field, and toppers, they do not leave any question. The candidate I'm talking about, she has only one drawback, कि वो अपने 15 minutes extra लेती थी अपने टाइम से। जब लास्ट मोमेंट था, जब 2 दिन पहले आई टोल्ड हर कुछ भी करके अभी कुछ मत पढ़ो, शी वाज सेइंग आई हैव टू रीड आल्सो, रिवाइज आल्सो। आई सेड कुछ भी नहीं करना आपको सिर्फ ये देखना है कि टाइम कैसे कम करूं। आपको 5 मिनट पहले पेपर खत्म करना है, 15 मिनट एक्स्ट्रा, आप समझ रहे हो, 1 मिनट 1 सेकेंड एक्स्ट्रा नहीं मिलता है आपको, बल्कि उसमें टाइम कटता ही है। आई यू नो होल प्रोसेस। कभी आपको चेयर्स ठीक नहीं मिलेंगी, कभी आपको गर्मी इतनी होती है उस टाइम पे, मे बी जून में जब आपका एग्जाम हुआ था। आई आस्क्ड लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स आल्सो, 1-2 और हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि हाउ वाज, नो इट वाज, द कंडीशंस वर नॉट राइट, बेंचेस इतने छोटे छोटे होंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम होगी, तो उसमें और आपके 5 मिनट्स कट जाएंगे, बच्चे कितने 3 hours माइनस 10 मिनट्स कर दीजिए। उसके बाद नया माहौल होता है, इन्विजिलेटर इज ऑन योर हेड, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा आपका अलग, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कंप्लीट द पेपर बिफोर 3 hours, 5 मिनट पहले ही खत्म करिए, ठीक है। तो ये बस उनका एक ड्रॉबैक था, वो ये था, ऑल्दो शी वाज एक्सेप्टेड, ठीक है। अब लिखिए। यस मैम, आपने जो अभी क्वेश्चन दिया है, इसमें जो लास्ट में कंक्लूजन है, ये किस टाइप से लिख सकते हैं कंक्लूजन? लाइक इसमें क्या क्या हो ऐड करना ही है? देखिए कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, इट इज आस्किंग अबाउट दैट व्हाट with respect to the biodiversity conservation, how the different sectors were improved। तो आपको इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी हाईलाइट करना है, जैसे आप कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, in order to achieve the sustainable development goal of 2030, right? Have you heard about this? Right, 2030 government, the India has to take more policies on it in order to achieve it, and with this mission, different missions है उनके, ठीक है। तो we have to achieve all that। और भी स्कीम्स लिख सकते हैं आप, राइट। ओके, थैंक यू मैम। एसटीजी 14 और 15 की बात कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आप बहुत ही सीरियस है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, यूज 2 पेन्स, या तो फीगो यूज करेंगे या फिर एक V7 करके एक पेन आता है, ठीक है, राइट, थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है। एक ग्रिप वाला है, वो आई गेस 80 रुपीज का है, और विदाउट ग्रिप आई थिंक 50, ठीक है। बट जब आप सीरियसली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी मत खरीदिएगा उसको, तब तक आप फीगो यूज कर सकते हैं, आई थिंक फीगो इज लिटिल चीपर, ठीक है। और उससे पहले बिकॉज यू हैव टू मेंटेन, क्योंकि स्वेटिंग एक्सेट्रा विच कम्स, आपके हैंड्स बहुत इंटैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, वो भी आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। रोहित, कब लिखोगे? अभी नहीं लिखोगे? क्यों? यही तो, ये माइंडसेट ही चेंज करना है मुझे। पढ़ा नहीं है, नहीं, इतना आप पढ़ चुके हो कि एक पैरा लिख सकते हैं, यही माइंडसेट मुझे चेंज करना है इस क्लास में। लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप? Okay, so sectors, you can define different sectors. For example, your electricity generation. कैसे हो रहा है? What government has done in that? They have introduced solar energy. That is a renewable method of generating the electricity, right? There's a various schemes also with respect to that, like PM Kusum, right? They have got into collaboration with international countries under ISA, International Solar Alliance. I know a lot of you do not know this,
पर इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है मेरे पास? करंट अफेयर्स. इलेक्ट्रिसिटी इन 2001, व्हाट इज दैट? हाँ बिल्कुल, यस यस, यू हैव टू राइट, यस डेफिनेटली. व्हाट इज दैट अंडर इट? आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लिखेंगे उसमें बस की पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे, इतना. व्हाट इज दैट? अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ही याद है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करना होता. गूगल करना है तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बिल्कुल भी माइंड में नहीं आ रहा है तो, कि क्या होना चाहिए इसका आंसर. आप लोगों ने लिटरली ले लिया क्या? सच में देख रहे हो? थिंकिंग प्रोसेस रुक जाएगा गाइस, अभी नहीं. मुझे लगा सच में, मुझे सच में देखने लगे सब लोग. ठीक है, कहाँ कहाँ तक लिखा आप सबने? सिर्फ इंट्रो तक लिखा? 10 मिनट में पूरा आंसर लिखना है? बोलिए इंट्रो तक यू हैव कम. हाँ राइट, धीरे धीरे वी विल अचीव, दैट इज अ गुड स्पिरिट. हाँ इज दैट राइट? आपको लिखना एटलीस्ट, आप आज इंट्रो तक पहुंचे, कल आप कंक्लूजन कुछ लिखेंगे फिर कल तक, ठीक है. ओके, देखिए इंट्रो में क्या क्या लिख सकते थे, क्या लिखा है किसी ने इंट्रो, कोई बता सकता है मुझे? आप बताइए, आप बताओ ध्रुव. Excellent, excellent. What he has done, he has bring out the crux कि इंडिया, सबसे पहले तो he has written India being a, in which region? Subtropical region, ठीक है. तो दिस इज व्हाट ही हैज हाईलाइटेड सबसे पहले. तो इस तरह के, अब आप जब गूगल करते हैं तो आपको एक ही फॉर्मेट का आंसर दिखता है, विच इज रॉन्ग. सब लोग फिर थिंकिंग प्रोसेस छोड़ देते हैं. इनोवेशन जो ला सकते थे, एग्जामिनर को क्या चाहिए? इनोवेशन जो आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ के या कुछ रीडिंग मटेरियल्स पढ़ के, ठीक है. So you have to add this. Then you could have added with respect to your biodiversity conservation. The biodiversity conservation is one of the things that one should take into account. Reason being, because of the recent climate change activities which are happening around, it is important that we should do it. Along with that, आप COP का discussion कर सकते थे. What is that? UNFCCC, who knows all about it? हम करेंगे उसका भी discussion. वो अलग से chapter. करेक्ट, ठीक है. तो डो नॉट वरी कि आपको अभी ये सारी चीजें नहीं पता है, आ जाएंगी, बट इंट्रो कैसे लिखना है एटलीस्ट वो समझ लीजिए, ठीक है. तो बायोडाइवर्सिटी और इंडिया को मिला के ये. एनी अदर इंट्रो, कोई है इंट्रो देना चाहता है? कोई बात नहीं, जस्ट बताइए, इतने सारे लोग हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू वांट टू गिव? हाँ Yes, ma'am. बताइए. Ma'am, I have written for a bright future
India needs to maintain a balance between economic development and sustainability. Emphasis on biodiversity conservation will ultimately lead to sustainability. जो आपने लिखा है, दिस इज परफेक्ट फॉर कंक्लूजन. Okay, ma'am. ये वाला पार्ट जो जो आपका टोन आ रहा है, दैट इज परफेक्ट फॉर कंक्लूजन, नॉट फॉर इंट्रो. ठीक है, Okay. क्या लिखा फिर से आप रिपीट करिए. आई टेल यू व्हाई. For a bright future, India needs to maintain a balance between economic करेक्ट. development and आप sustainability. आपने बैलेंस की बात करी है, राइट. Yes, ma'am. Yes. इंडिया नीड्स टू, जब आप नीड्स टू की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ सजेशन. और ये सजेशन कब दिया जाता है? एंड में, नॉट इन द स्टार्टिंग. ठीक है, so it is perfect Right, for ma'am. your conclusion, not for your intro. आ रहा है समझ? टोन कैसे चेंज होता है जब हम नीड्स की बात करते हैं. दिस पर्सन नीड्स टू डू दिस, और इंडिया नीड्स टू डू दिस, और रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सेक्टर दे नीड टू bring out these initiatives. So this is known as balance. आप इंट्रो ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे. इंट्रो जैसे ध्रुव ने स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन देकर इंडिया का, एंड देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे. ठीक है, डन. ठीक है, आप भी बताना चाहते हैं? वेरी नाइस, बताइए. Because of hindrances like industrialization and urbanization and overusing resources, etc., due to which ecosystems are getting affected badly. So we have to, after that, we have to, I have to forward in the following sectors for अच्छा, आपने लिखा बिल्कुल सही है, पर ये भी इंट्रो में नहीं आएगा. ठीक है, बीच में यूज कर सकते हैं इसको, बॉडी में यूज कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं, पर इंट्रो में नहीं आएगा. ठीक है, इंट्रो कैसा लग सकता है? उसमें थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने बोला दैट, एक कोटेशन ऐड कर सकते हैं. डेटा यहाँ से अपने बायोडाइवर्सिटी का कोई कोटेशन ऐड कर दिया. ठीक है, फिर कोटेशन के बाद कोई कोट, देन यू स्टार्टेड विथ द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग. कुछ स्कॉलर्स याद रखेंगे आप. अकॉर्डिंग टू दिस स्कॉलर, बायोडाइवर्सिटी इज एक्सप्लेन्ड एज दिस. आपने पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा, अकॉर्डिंग टू दिस स्कॉलर, तो क्या आ गया? एक अब सब्सटेंशियलनेस दे रहे हैं आप अपने आंसर को. फिर अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाय UNFCC, state or India needs to improve this much percent in their biodiversity conservation. पहले एक डेफिनेशन लिख दिया, फिर आपने एक फैक्ट लिख दिया. ठीक है, इस तरह से इंट्रो देना. ठीक है, डन. बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सेक्टर्स की बात हो रही है. कैन यू टेल मी विच सेक्टर इट बिलोंग्स टू? टेक्सटाइल में आप कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं वो लोग, तो उस स्कीम्स के बारे में बात करें. जैसे मैंने पीएम कुसुम के बारे में आपसे बात करी, इस तरह से ऐड कर सकते हैं. ठीक है, कल हम इसका मॉडल आंसर लिखेंगे क्लास के अंदर, घर पे जाके आप प्रैक्टिस करेंगे दोबारा. ठीक है, टुमारो वी विल राइट अ गुड मॉडल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, I'll give a model answer. You will write your own answers on your own at home. ठीक है, ओके, आगे बढ़े. Recent report. Write down approaches for biodiversity conservation. Approaches for
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब मैं आपको कंटेंट दूंगी, ये कंटेंट आप ये सोचेंगे इस क्वेश्चन में ये कंटेंट कहाँ कहाँ यूज कर सकते थे आप या यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं कंटेंट आपको दूंगी तो आपको पता चलेगा कि हम ये भी इंट्रो यूज कर सकते थे, ठीक है। राइट डाउन। बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। Biodiversity knows no political boundaries, and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations. Full stop. The historic convention of all nations. Can this would have been used in the intro? Yes, and how it would have impacted? कैसा लगता है intro? Very impactful, right? Now, full stop. The historic convention of biological diversity bracket the Earth Summit held in Rio de Janeiro. Where it is? Brazil. Rio de Janeiro in 1992, comma, called upon all nations to take appropriate measures Just give me a minute, huh? Right. Write down appropriate measures for the conservation of biodiversity and sustainable utilization of sustainable utilization of its benefits. ठीक है, full stop. Write down, how do we conserve biodiversity? How do we conserve biodiversity? Write down, there are two basic strategies of biodiversity conservation, comma, in situ and ex situ. Spellings are written here. In situ and ex situ. In situ means inside, and this is means outside.
इन सेतु एंड एक्स सेतु. ठीक है, राइट डाउन इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज. In situ conservation strategies. Write down conservation of a species. Conservation of the species is best done. Conservation of the species is best done by protecting its habitat. By protecting its habitat along with other species. Along with other species that live in it in the nature, that live in it in the nature. Full stop. This is known as in situ. This is known as in situ conservation. Comma, which is conserving a species. Which is conserving a species in its own environment. In its own environment. For example, by creating national parks. By creating national parks and wildlife sanctuary. While creating national parks and wildlife sanctuaries. ठीक है? First I'll explain, then I'll give you more dictation. देखिए, दो तरह के आपके प्रोसेस होते हैं फॉर द कंजर्वेशन. वन इज इन सेतु, अदर वन इज एक्स सेतु. आई फर्स्ट एक्सप्लेन इन सेतु. जब हम किसी भी स्पीशीज को उसके ही एनवायरमेंट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब if some species are living in this area only and we are just trying to seclude it or we are trying to protect it in its own environment, we call it as in situ conservation. ठीक है? For example, if you say lion are found in Gir forest. Where is Gir forest? Gujarat, right? So Gir forest के अंदर what we will do, we will try to bring out some strategies to protect the lions. So this is known as उनकी खुद की habitats में, in their own habitats, we are going and protecting them. Right? We are going and protecting. Either we can do it by seclusion, either we can do it by creating a boundary, right? Either we can do it by declaring this as national parks, or either we can do it by declaring it as wildlife sanctuary. I'll discuss what all are they. Wildlife sanctuary क्या है, national parks क्या है, इनके बीच के differences क्या हैं, wildlife sanctuary कब बनता है, national park कब बनता है, protected area कब बनता है, community reserves कब बनता है. ठीक है? So there are 4 types in which you can do. One is national park, right? Then wildlife sanctuary, then you can create protected areas or community reserves. These are some of the formats that you can do in order to conserve them. इसको बोलते हैं in situ conservation. In means inside, protecting the species in their own environment. ठीक है? अब लिखिए, in situ conservation means, और लिखिए further, in situ conservation means the conservation of ecosystem, the conservation of ecosystem and natural habitat. It means conservation of ecosystem and natural habitat and maintenance and recovery of
and maintenance and recovery of viable population of species viable population of species in the natural surroundings in the natural surroundings where they have developed where they have developed their distinctive distinctive nature. ठीक है, अब लिखेंगे। देखिए इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। इनसे तो कैसे कैसे कर सकते हैं आप? बाय क्रिएटिंग अ नेशनल पार्क, by creating a protected area, by creating a community reserves. So first we will do all of them. I should make you write XA2 first. XA2 लिख लीजिए अभी because of the time. XA2 conservation. In this approach, threatened animals and plants are taken out In this approach, threatened animals and plants are taken out from natural habitat and placed in a carefully controlled situation where they can be protected. Where they can be protected. And given a special care. For example, zoological parks, comma, botanical gardens, comma, in vitro fertilization, INVTRO. In India, comma, successful XA2 conservation. In India, successful XA2 conservation programs have been done for all our three species of crocodiles. Write down another example. Another recent success has been the breeding of
the breeding of crocodiles. Ma'am, Another recent success has been the breeding, BREEDING, breeding of the very rare pygmy hog. Spelling is this: pygmy hog in Guwahati, Zoo. ठीक है, X2 किस किस को समझ आ रहा है? See, what we will do in X2, we will take the particular species out from its natural habitat, right? We will take out the species out from its natural habitat. We will keep it somewhere else. For example, zoos. For examples, any species. Botanical gardens में क्या रखा जाता है? Your plants. Plants are safe here. They are kept here. Or any safe place. For example, recently Vantara in Gujarat. What is that? वहाँ पे एक्सिट conservation हो रहा है. That elephants are brought here in Vantara and they are being treated medically, right? They are being diagnosed, treated, and then you place them back in their own habitat. Recent example, elephant का कोल्हापुर में था, right? Where people were crying when the elephant was taken, right? And what they said, there was a formal letter which was been released by Vantara's authorities that we truly understand the sentiment of the people where this elephant was living. I do not know her. There was a name of that elephant from M, I guess. What was the name? Do you know the story? You know? किसी को पता है? What was the name of that elephant? बताइए. People literally cried when the elephant was living. So, by understanding the sentiments of elephant and people, huh? Mahadevi, are you sure? ऐसा ही नेम था कुछ. Are you sure? I'm Mahadevi था. Okay. Okay. So then they told them, okay, we will give it back to you. We don't have any intention to keep it with ourselves. We will just diagnose the particular elephant. We will treat them well and we will give you back. Right? So this is the X-Setu. ठीक है, use such recent examples because these are the good current examples which can give a good understanding in your answers writing. ठीक है, tell me the name. Is it Mahadevi? She is saying मैम Mahadevi. माधुरी. माधुरी, yes, मुझे लग ही रहा था कि कुछ और है. हाँ, कुछ और था, right? इनसे यही आ रहा था, मुझे यही लग रहा था कुछ और नाम है, right? What is the other way? Zoo. Zoo is also a way where you take the species out. उनके natural habitat से आप बाहर लेकर आ जाते हैं and then you conserve them, you treat them. ठीक है? कोई doubt इसमें? Any doubt in this? Examples you can add like that. हाँ, right. Vultures का I think देहरादून में it is. देहरादून में भी है ना? Vultures का देहरादून में भी है बहुत. अच्छा, right. Okay. सबसे पहले when I am going to introduce National Park Wildlife Sanctuary tomorrow to you,
Before that, I want to discuss two acts. Write down Forest Conservation Act 1980. Write down. This act was adopted to protect and conserve forest. This act was adopted to protect and conserve forest. Full stop. The act restricts the power of state. The act restricts the power of state of the reservation of DDE, the reservation of forest and use of forest land and use of forest Ma'am, land, the reservation. the reservation of forest and use of forest land for cultivation of for non-forest purposes. Write down. I'm again repeating. The act restricts the power of state in respect of dereservation of forest and use of forest land for non-forest. कहाँ से छूटा आपको? शुरू से बोलूं? अच्छा ठीक है, फिर से I'm repeating. The act restricts the power of state in respect of dereservation of forest and use of forest land for non-forest purposes. Full stop. The term non-forest purpose includes clearing any forest land for cultivation of cash crops. Ma'am, after Yes. कहाँ से आपका रह गया? ma'am, the term non-forest purpose. हाँ, the term non-forest includes clearing any forest land for cultivation of cash crops, comma, plantation crops, comma, horticulture, or any purpose other than reforestation. कब आया था ये एक्ट? 1980 में. क्या पर्पस है एक्ट का? कि फॉरेस्ट को क्या करना है? रिजर्व करना है. किसके लिए? फॉरेस्ट को क्या नहीं कर सकते आप? यूज नहीं कर सकते. किसके लिए? फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज. ठीक है, तो व्हाट इट इज सेइंग, द एक्ट रिस्ट्रिक्ट्स द पावर. किसकी पावर? स्टेट की पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ डी रिजर्वेशन. डी रिजर्वेशन इज द ऑपोजिट ऑफ
रिजर्वेशन मतलब आप उसको डी रिजर्व नहीं कर सकते एक बार रिजर्व हो गया तो। किस पर्पस के लिए? यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। अब नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस में क्या होता है? यूजिंग द एरिया फॉर एनी अदर एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कौन सी होती है? या कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप्स के लिए आप नहीं यूज कर सकते एरिया बिकॉज वो रिजर्व है। देन प्लांटेशन नहीं कर सकते, हॉर्टिकल्चर नहीं कर सकते, और एनी पर्पस सिर्फ क्या कर सकते हो आप इसको यूज? सिर्फ आप उसमें री एफॉरेस्टेशन, अगर उसको री एफॉरेस्टेशन करेंगे दैट विल गोइंग टू इंक्रीज इट्स यूटिलिटी, ऑब्वियसली इसको बेटर करेगा। सिर्फ अगर वो कर सकते तो करेंगे, आप उसको यूज नहीं कर सकते। ये this act was got released in which year? 1980। ईयर याद रखेंगे बिकॉज लॉट ऑफ टाइम सिर्फ वन वर्ड में आ जाता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज adopted or maybe it was enforced in which year? Then 86, 85 बहुत close लिखा होता है, 82, 80, 81 and then you will get confused। तो ये आपको याद रखना है in which year it got released। ठीक है, tomorrow we will do Wildlife Protection Act 1972 and then we'll discuss about different national parks, etc. If you have any doubt, please ask me। Okay, so I am planning आप लोगों के लिए नहीं, only people who are taking the classes पहले से, I'm planning a test this Saturday। ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं है क्योंकि आपकी सैटरडे को मेरे साथ अलग से एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है, आप लोगों को नहीं देना है टेस्ट, आपको नहीं देना है, और 2 स्टूडेंट्स और है ऑनलाइन, उनको नहीं देना है। ठीक है, तो पहले आप ये कर लेंगे, फिर आप बाद में अगर देना चाहते हो तो यू कैन गिव इट, ऐसे मना नहीं है, बट बाद में यू कैन गिव, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, तभी मैंने आपको आज मेंस भी इंट्रोड्यूस कराया कि लिखना कैसे, सब्जेक्टिव भी होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, माय इंफॉर्मेशन हैज बीन given to you, like this information has been given to you, right? Please note it down, otherwise also you will be informed on telegram group whichever you are connected with, right? In whichever manner you are connected with the team। ठीक है, वैसे भी formally I have given this। ठीक है, कभी भी दे सकते हैं, मतलब कभी भी मतलब किसी भी टाइम दे सकते हैं सैटरडे को। ठीक है, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, आके भी दे सकते हैं, तो आप ब्रेक के रख लीजिएगा, संडे को कर लीजिएगा एंड देन सबमिट। ठीक, मंडे को कर लीजिएगा। ठीक है, डन। आके भी आप लिख सकते हैं, यू नो ना, अपलोड होगा, यस, पोर्टल पे अपलोड होगा फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और जो आके लिख के बैठ के देना चाहते हैं प्रॉपर इन दैट एनवायरनमेंट, दे कैन गिव इट इन दैट मैनर ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, बताइए। मैम, हिमाचल का स्पेशल क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, राइट? I don't have any clue. I have to see the timetable. Probably it had to start by next week, but I have to see the timetable, or maybe this week only. I'll see the timetable. Okay, I'll let you know. Okay, ma'am. Thank you.